वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेंगे। और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो not wasting time, I will request all of you to send your questions as soon as possible so that they are addressed in this show only. आज के हमारे खास मेहमान जो है वो है तीर्थंकर दास, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिटेल, आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। वेरी गुड आफ्टरनून तीर्थंकर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Yeah, thank you, ma'am, for inviting me. And through this platform, I like to wish all your viewers a very happy New Year. May everyone have a profitable year this year. जी थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स भी आपको सुन रहे हैं तीर्थंकर, एंड आई होप द मार्केट जो करेक्शन मोड में है इस समय, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मार्केट्स हैव करेक्टेड। और जो आज निफ्टी का जो निचला स्तर छुआ वो रहा 21,300 के आंकड़े को भी रीच किया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा पुल बैक, एक रिकवरी, और 21,500 का आंकड़ा भी हमको देखने को मिला। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसने काफ़ी ही क्रूशल अहम 47,000 का लेवल तोड़ के उसके नीचे कामकाज कर रहा है? This is not a surprise for me that the market has corrected in the month of January. I mean, if we can remember in our previous meeting that we have been propelling 22,200 is the immediate target for the market, and from there onwards some amount of profit booking can be seen. Or last 15 to 25 years का data अगर आप देखोगे तो January month happens to be a very volatile month with a monthly decline of 2.5%. So this is not a surprise for me that the market has corrected. More volatility are expected to come from here onward. But the surprising fact in the market right now is that the decline in the market is led by one particular stock in the index, that is HDFC Bank. I mean, if you see all the other indices, all the other stocks that are in the Nifty 50 list, I mean, they haven't given that deep a correction like that of HDFC Bank. So definitely market में अभी भी strength है in the medium term. Basically मैं जो कहने चाहता हूँ कि correction are part and parcel of the trend. ठीक है, embrace the correction into the market, be brave, and every dip में आप correction में buy कीजिए, because the longer term rally in the market is still positive, and this is just a normal correction in the mega bull run. So definitely there is nothing to be fearful in the market. Just be a little light into the market for the time being, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा और डीप जा सकता है मार्केट में करेक्शन। करीबन value buying hunting level would be the level of 20,900. That would be the ideal level for the investor to get into it, rather than a pullback, silly एक pullback अभी मार्केट में दिख रहा है कि 21,300 अभी मार्केट में सपोर्ट लेके मार्केट बढ़ रहा है, but I don't think this is gonna sustain here onward. Better value buying level would be 20,900, and I expect the market to correct towards that level. तीर्थंकर, अगर इफ दोज लेवल्स आर रीच, जो आप लेवल्स टारगेट कर रहे हो, तो कोई स्टॉक का लिस्ट आपने बनाया है जो आपको लगता है कि these are the stocks that you need to buy when this level hits on Nifty? Yes, I have some stocks in my list. Definitely everybody should be prepared with a set of list where whenever market correct to the extent of 5% or 10%. So I am pretty much bullish in the IT and the oil gas and the pharma space as well. And as we have seen, the PSU stocks have rallied, give an exceptional return the previous year. And I expect the same performance this year as well. So definitely IT stocks are the one that are in favor for me right now, and some other stocks like the SJVN is a favorite pick for me right now, and other being the Inox Wind, which has given a decent amount of correction, which can be a value being area for this particular stock. So definitely one can accumulate these two particular stocks in the long run. चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और टीएस का पहला सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास नाइका के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 169। सो ही इज होल्डिंग नाइका एट द रेट ऑफ FSN के नाम से लिस्टेड है,
at the rate of 169 each. Your view, sir? और आज जो लेवल चल रहा है वो करीबन 165 के आसपास का है, इनकी खरीद के बहुत करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में आज के दिन में, क्या करना चाहिए? Well, I'm not that a big fan of this particular stock, but even though ट्रेडिंग बेट जरूर बन सकता है 165 to 160 का लेवल पे ही ये ब्रेकआउट दिया था. सो व्हेन इट कम्स अराउंड द लेवल ऑफ 160 वन कैन एक्यूमुलेट, और अगर उसका बाई है तो मेरे ख्याल से अगर 155 का स्टॉप लॉस पे अगर होल्ड करे तो शायद बेहतर रहेगा. आई मीन अगेन आई एम नॉट दैट बिग अ फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आई डोंट फाइंड द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड इन दिस स्टॉक. मोर डाउनसाइड कैन बी सीन until unless it provides a decisive close above 200 का लेवल. इसमें ट्रेंड मिलना शायद पॉसिबल नहीं है. ट्रेडिंग बेट हो सकता है, बट अदर देन दैट आई डोंट फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. ओके, अजय कुमार जी का सवाल है जीएमडीसी पे. जीएमडीसी वो खरीदना चाहते हैं इन लेवल्स के आसपास. आज जो स्तर जीएमडीसी का है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो 457.35 के आसपास है. करीबन 1.25% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन में देखने को मिल रही है. सो व्हाट इज योर व्यू? शुड ही बाय एट करंट लेवल्स? अगर उसका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, सो डेफिनेटली वन कैन go at current level also, but the market conditions are not good. I expect a little bit of further correction in the market, so staggered way में buy कीजिए. A correction to the extent of 410 to 415 would be an ideal level to enter, or 400 might be a better entry point for this particular stock. So definitely investment bet, but the time is not right to enter. So that's what my view is. So he has to wait for some more time, right? Yeah, I think I think one can enter at this level also, but on a staggered manner. One can buy at this level also and buy the rest at the level of 400. Right. मुस्तफा शेख का सवाल है, IRB इनविट करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा है? क्या ये लो रिस्क है? प्लीज एक्सप्लेन सर. IRB InvIT. Hold on, please. Well, it's currently trading at the price of around IRB InvIT. Okay, let us leave this talk till you find it out. I'll go to the second question. किरण का सवाल आया है, सर जी हमको ऐड करना चाहिए एट करंट प्राइस, और जी में आज करीबन 2.5% का इजाफा है. देयर इज अ न्यूज़ विच इज सर्कुलेटिंग इन द रिपोर्ट्स on some of this there's a buzz in the market that जी और सोनी के बीच में जो वार्तालाप चल रही है, जो डिस्कशंस चल रहे हैं ऑन द मर्जर, वो रिज्यूम हो चुके हैं. और उसके बाद जो जी के सीईओ है इस समय, ही हैज़ आल्सो एग्री टू स्टेप डाउन, यानी कि वो अपनी पदवी को छोड़ने के लिए शायद उन्होंने सहमति जताई है, जो एक मेजर रुकावट थी मर्जर के बीच में. सो ऐसे र्यूमर्स के बीच में द स्टॉक इज अप 2.5%. क्या करंट मार्केट प्राइस पे और ऐड करना चाहिए? ये उनका सवाल है. Well, देखिए जी, I mean it would be I mean I think Z would be benefited if they sit on a table and discuss and sort these things out. So definitely I think even if it's a rumor, but I think in the in some period of time they are going to sit and sort things out about the merger with the Sony. So definitely मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग एरिया है. ऑन टेक्निकल फॉलेंस 240 का एक सपोर्ट लेवल है, वहां से आपका सपोर्ट दिख रहा है. बट अगेन स्टैगर्ड वे में बाई करना बेहतर रहेगा. वन कैन एंटर एट दिस लेवल ऑल्सो. इट वुड बी रिस्की बेट to enter at this level, but I think in the near term, maybe 3 to 6 month period में शायद ये रिटर्न दे सकता है. towards the level 320 का भी टारगेट यहाँ पे बन सकता है. बट थोड़ा कॉशियस वे में बाई करना चाहिए, बिकॉज I mean you don't know, I mean what news turns out from this particular from this stock. So definitely staggered way में buy कीजिए, and I think you could give a decent amount of return in the long run.
प्रशांत कुमार झा जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास नाल्को के 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 67 रुपीज 56 पैसा ईच। अभी इसे और एक साल के लिए रखना चाहता हूँ, इसका टारगेट क्या हो सकता है एक साल के लिए? Yes, I mean, today was an opportunity to re-enter again in this particular stock. Right. Definitely hold करना चाहिए। एक मेरा एंट्री लेवल शायद 120-125 के करीबन था। हालांकि इसका लो 125-40 का मारा गया था आज। So definitely there was an opportunity today as well to re-enter in this particular stock. Definitely a long-term bet. For the investors in this stock, upside target can be around the level of 175 in the near term. For a time period of 6 months to 9 months के पीरियड में 175 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा बहुत कंसर्न है because of the market condition, so that's the reason why I am suggesting कि buy at lower level of 125 to 120. That would be an ideal entry point. But at current level also, if he has an investment perspective of 1 year, so definitely one can buy in at current level as well. एक और सवाल आया है, उन्होंने नाम नहीं भेजा है। सर, व्हाट शुड वन डू इन टाटा कम्युनिकेशन? आज रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक आज 1720 रुपीस के आसपास कामकाज कर रहा है। 23 रुपए की तेजी है, 1.5%, नियरली 1.5% अप। क्या करना चाहिए? Well, I can't predict what the result is going to come. So definitely let the result come in, and against that one can take a proper decision. But other than that, on the technical front, stock seems a little weak. If it's able to hold the support level of 1680, then definitely it's out of the wood, and upside rally can be around the level of 1850 to 1875. But again, be cautious in the market right now. Let's the result come, and then one can make a concrete decision in this particular stock. Right. एक और सवाल आया है, नाम नहीं लिखा है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स जो भी अपने सवाल अपने हैंडल से सवाल भेजते हैं, जिनके हैंडल के नाम कुछ और है, अपना नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। अब ये जो सवाल है वो आईआरबी इंफ्रा पे है। आईआरबी इंफ्रा इसे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? और आईआरबी इंफ्रा आज करीबन 3.25% के मजबूती के साथ कामकाज कर रहा हुआ है। इस गिरते बाजार में भी 4698 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए तीर्थंकर? Yeah, well, if he is a trader, then definitely one should book certain amount of profit in this particular stock, because थोड़ा बहुत divergence देख रहा है on technical balance. There is a divergence in this particular stock, so let's be careful and book certain profit from this particular stock. And if he is a long-term investor, so no need to worry in this particular stock. And I think I won't be surprised if this particular stocks give a 3-digit kind of a figure in the long run. Okay. So definitely one need to hold this particular stock. And for the trading bet, let's book some profit considering the market condition. टेकपाल भाटिया जी का सवाल आया है, सर योर व्यू ऑन अनूप इंजीनियरिंग। और अनूप इंजीनियरिंग आज जिस लेवल पे है 2797 के आसपास का यहाँ लेवल देखने को मिल रहा है। इट इज़ डाउन नियरली 0.5%। जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? If the particular person is a trader, so let me say कि it has taken support from the 50-day moving average around the level of 2700. ठीक है, अगर for a trader है तो 2700 का stop loss दीजिए, और let's see if it can there is potential it can rise towards the level of 3000 as well. But if he is an investor, so I think this is not the right price to enter, because again a divergence can be seen in this particular stock. थोड़ा नीचे आने का संभावना है। If it breaks the level of 2700, then downside level can be around the level of 2400 to 2300. So that would be an ideal level for an investor to enter in this particular stock. But other than that, for a trader, definitely a risky bet with a stop loss of 2700. One can take a risk in this particular stock. दीपक कुमार जी का सवाल है, व्यू ऑन फेडरल बैंक सर। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए उनको। आज फेडरल बैंक में हल्की सी मजबूती है, 147 के आसपास का स्तर है। क्या करना चाहिए? I don't think this stock is going to perform in the short period of time. It's going to give a deeper correction from here onward towards the level of 140. That would be an ideal level to enter in this particular stock. Other than that, I don't find this stock interesting
for the time being, a deeper correction can be seen if it breaches the level of 140. So there are other banking stocks in the market that one can definitely enter, like PNB, Canara Bank, Maharashtra Bank. These are the all banks that have a terrific chart pattern that one can enter. But for the time being, I would request not to concentrate on Federal Bank. I don't find the chart pattern quite interesting. What is your view on HDFC Bank post the carnage that we saw? The stock is down nearly 10% from its recent highs. और जहाँ इसकी बात ये हो रही थी कि ये अंडर परफॉर्मर है, अब ये परफॉर्म कर सकता है, एवरीबडी वाज काइंड ऑफ टर्निंग बुलिश ऑन द स्टॉक, और एकाएक रिजल्ट्स के बाद इट हैज़ बीन पनिश्ड. क्या करना चाहिए HDFC बैंक में करंट लेवल्स पे? I don't find the stock that bad at this current level. That is, 1450 is quite a good price to enter in this particular stock if he is a long-term investor. Other than that, I mean, on technical parlance, I mean, it hasn't given any kind of a return for the past one or 2 years. I mean, it's very hard to predict what one should do in the next one and a half year. But definitely one of the larger banks so one can staggered way में buy कर सकता है. 1450 is quite an important level. वो अगर तोड़ता है तो शायद थोड़ा और डीप जा सकता है करेक्शन towards the level of maybe 1370 तक जा सकता है. So for the time being, I would rather say कि avoid for the time being. One can invest in this particular stock with a very marginal quantity, like at around the level of 1450. Other than that, as I said, there are a lot more stocks in the market in the banking space as well. So one can concentrate on those particular stocks rather than HDFC Bank. This would be a very risky proposition at this particular juncture. कुछ indication अगर फिर से अगर आता है तो then the outlook might change. But other than that, for the time being, I would rather avoid. जी, रमेश कुमार जी का सवाल आया है. सर, योर व्यू ऑन अग्रवाल इंडस्ट्रीज फॉर 2 years एंड प्लीज लेट मी नो टारगेट ऑल्सो. सो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है इस समय वो चल रहा है 1054. द स्टॉक इज अप 7% टुडे, nearly 66 rupees gain in a market which is under pressure, but still this stock is been doing well. Yes, the volumes are not that good in this stock. It's a low volume stock. क्या करना चाहिए इस पे? Very fantastic kind of a chart pattern can be seen that have been developing in this particular stock. It's on the verge of giving a breakout above the level of 1080. आपने कहा कि volume are a bit on the lower side. Well, I agree with you, but if you consider that for the last 10 to 15 days ka average, it has crossed a bit. So definitely concentration are in this particular stock. I mean, some people are aggressive in this particular stock. I think it's on the verge of giving a breakout. Definitely a good pick amongst a lot, and higher target can be around the level of 1150 का target शायद बन सकता है. Very good pick. I think one can definitely concentrate in this particular stock. But is it wise to really get into the stocks where the volumes are very low, because the float कम होगा तो आपको निकलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है if it turns around? Well, there are risks like that in the market, but I mean, well, yes, I agree. There is a risk of exiting from this stock. I mean, at such kind of a situation. Right. प्रशांत कुमार झा जी का सवाल आया है. उनका सवाल NMDC पे है. NMDC, should I buy NMDC at current levels for investment? Please give me your view for 2 to 3 years. So he's a very long-term investor. So I think he wants to buy this stock to create wealth for himself in the long run. And NMDC में निवेश की सलाह आप इन लेवल्स पे देंगे, और अगर देंगे तो 2 से 3 साल का टारगेट क्या होगा?
I would like to congratulate that particular client that he has an investment outlook in this particular market where people are speculating in the market with the derivatives and the options and the bank nifty and nifty. जहाँ पे इस तरह का outlook है वहाँ पे he is thinking of a 3-year investment that definitely I mean reflects a sound mental person. So definitely thank you. I mean for interacting us with those kind of a client. तो डेफिनेटली हाँ एनएमडीसी तो डेफिनेटली लेना चाहिए 3 साल का पर्सपेक्टिव में अगर आपका यहाँ से अगर मार्केट 5% भी अगर करेक्शन देता है इवन दिस पर्टिकुलर स्टॉक गिव्स अ करेक्शन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 170 or 180 also one need not worry in this particular stock definitely is going to give a decent amount of return target आपका I mean I won't be surprised it would cross the 500 का level in the 3-year period I mean that was a very defensive target I am giving in the 3-year period 500 का target is quite a defensive for the time being but अगर आपका 3 साल का पर्सपेक्टिव है आपका 5% 10% का करेक्शन कोई मायने नहीं रखता है बिकॉज इट कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर एज वेल सो डेफिनेटली दिस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं लेकिन टेक्निकल पार्लेंस में शायद 180 कैन बी अ कंफर्ट लेवल फॉर मी बट एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन आल्सो वन कैन एंटर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सदानंद जी का सवाल आया है सर व्हाट इज हैपनिंग इन बजाज फिनसर्व इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट well technically I think there's a bit more correction left into the market towards the level of 7,000 can be an ideal entry point मेरे को लग रहा है कि this stock is not going to perform in the next 2 to 3 months so for the time being I would like to avoid this particular stock and wait for further trend change or maybe some kind of indication that would propel me to have a focus in this particular stock other than that 7,000 is an important level वहाँ पे अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा जा सकता है then also I'm skeptical in this particular stock at 7,000 level also. Okay. टेकपाल भाटिया जी का एक और सवाल आया है लॉन्ग टर्म बाइंग प्राइस ऑन आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक इज आल्सो होल्डिंग अप इन दिस फॉलिंग मार्केट इट इज अप नियरली 1.5% at 69.58 so he wants to buy it for long term good or bad Considering the market condition, I would like to buy on strength. अगर इसमें ब्रेकआउट आता है 71 के ऊपर तो ही शायद मैं बाइंग करना शायद ठीक रहेगा वेल 69 इज एन इंटरेस्टिंग प्राइस यहाँ से पुल बैक दे सकते हैं बट आई वुड रादर वेट फॉर अ कंफर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस ब्रेकआउट that is above the level 71 that would give me an indication that it has given a breakout because if you see the chart pattern for the last 3 to 4 months it hasn't given it I mean since September onward it has been consolidating in a very narrow range so let it breach above I mean it crosses the 71 per level agar breach karta hai so that would be an ideal I mean that would give me a confirmation that it is out of the blues okay there's a question from Tas Saeed and his question is on Supreme Petrochem so he wants कि इस लेवल पे क्या Supreme Petrochem के स्टॉक को लेना चाहिए और Supreme Petrochem is currently trading around 539 rupees 35 paisa it's down nearly 1.5% today yeah just give me a minute yeah sure Well, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न फॉर द लास्ट 2 years में देखोगे तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग अमिड्स द लेवल ऑफ 800 to 650 इसी रेंज में मूव कर रहा था बट इन द मंथ ऑफ मार्च इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट मार्च और ठीक है तो डेफिनेटली इट इज at a break I mean it has given a breakout so definitely chances are bright कि यहाँ से ऊपर जाने का संभावना है presently it is consolidating in a narrow range so well again
I mean, if the correction gets deeper enough, then 850 can also be seen. So 850 would be a comfort level for me to enter in this particular stock, in this particular at this level. But for an investment perspective, maybe for a 6 to 9 months perspective, definitely one can. Well, I'm comfortable at 850 level rather than at current prices. ओके सदानंद जी का सवाल है, इज इट गुड टाइम टू एक्यूमुलेट बलरामपुर चीनी, कैन कंपनी मेक ए कमबैक? और आज चीनी पे खबर अभी 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 आई है, उसको शेयर कर लेती हूँ। यूपी में शुगर केन सैप के प्राइसेस में हाइक किया गया है बाय ₹200 पर टन, सो दिस कैन बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द शुगर सेक्टर। सो बलरामपुर चीनी में क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेट करना चाहिए करंट लेवल्स पे, और क्या आपको लगता है कि इसमें एक बार फिर मोमेंटम आ सकता है? For the time being, it is at a tender hook. I mean, 370 is a very important support level. It has given multiple times. It has given a pullback from those levels. So let's cross our fingers and wait till it doesn't breach the 370 level, and a pullback can be seen. But one need to maintain a strict stop loss. अगर investment का perspective है, there is no denying the fact that the government is has quite a bit of focus on the ethanol blending and stuff like that, and the news that you read out. So definitely in the long run, sugar stock एक portfolio में रहना चाहिए. I'm not denying that fact, but for a trader perspective, let's hope it doesn't breach the 370 level in the Balrampur Chini में 370 का level ना तोड़े. So on a defensive note, let's put a stop loss of 360 and wait for it. It gives a rally towards the level of 425 to 450 का level शायद आ सकता है, based on the news and the current market condition. But maintain a stop loss of 360. हाँ, और ये स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। पिछले एक साल का अगर चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक वहीं के वहीं खड़ा है। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल आया है। गुड आफ्टरनून सर, निफ्टी स्टॉक LT Mindtree has fallen more than 10% today, and it is because of the bad numbers that they posted. At what levels to add? It is in my portfolio. Oh, well, presently अभी तो आपका सपोर्ट लेवल पे ही है। 5600 is a quite a, I mean 5600 is quite a decent amount of support. I'm sorry, 5400 is a quite a decent amount of support for this particular stock. But if it's not able to sustain this particular level, then the next level of downside correction can be around the level of 51,000. Okay. So अगर आपको एवरेज करना है, I don't know what what the results are and what kind of project outlook they has given, but definitely on a technical parlance 5100 का लेवल पे अगर एवरेज करना चाहे तो that would be a better action in this current market circumstances. So 5100 is a comfort level for me to enter in this particular stock. प्रशांत कुमार झा जी का सवाल ले लेते हैं। प्लीज गिव योर एडवाइस ऑन HAL एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर 1 year फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। There is no denying the fact that HAL has given a multi-bagger kind of a return to the investors. I mean, from the IPO period, it has given. It was a pain for the. It was a pain for the last 2 years, but from there onwards, since 2020 onward, it has given exception rally, and even the present government has a focus in the defense sector as a whole, and PSU also playing a role, has been the outperformer in the previous year. So definitely again I expect in the coming year as well PSUs are going to perform, and HL is one of those picks that definitely one need to have in their portfolio. At current juncture, थोड़ा बहुत correction आ सकता है. I mean, there is a bit of an exhaustion in prices. I don't think correction can be seen. There is a bit of a exhaustion can be seen in the prices. So downside can be around the level of 2800 के करीबन आ सकता है. मतलब hardly any kind of a correction considering the rally it has given. So 2800 can be an ideal entry point for the short-term trader. But other than that, I don't find anything wrong in this particular stock. So without any kind of a worry, one can
invest in this particular stock for a longer term perspective as well. And the other one that you mentioned about the Reliance Right. industry is, I think it's also coming out of the blues. It has given a breakout above the level of 2600 to multiple times. It has acted as a resistance for this particular stock. So again, I think in the long run, it is going to rally towards the level of 3300 to 3500 can be a target for the 1 year perspective. 1 year perspective can be a target of 3300 to 3500 का target से मिल सकता है. क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आप भेजते रहेंगे उसे हम अपने कल प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे 1 से 1.5 के बीच में, तो आप निराश नहीं होइएगा. तीर्थंकर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वॉज प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर. थैंक यू मैम. तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं. आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब चैनल पे जागरण बिजनेस के अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं. उसे हम कल के कार्यक्रम में आप शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर अपने सवाल ज़रूर भेजते रहिए. आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आप इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि फ़ायदा उनको भी होगा. जब उनके सवाल हम लेंगे तो उनको डिसीजन मेकिंग में सहूलियत होगी और वह प्रॉपर डिसीजन मार्केट में बना पाएंगे. आपका एक और आग्रह भी ये है कि व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा. उसका डिस्क्रिप्शन आपको वही यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उससे भी सब्सक्राइब करिए. और हम आपको दिन में जितने भी गेस्ट हमारे चैनल पे आते हैं उनकी जो राय होती है, उनके जो पिक्स होते हैं वहाँ पे पोस्ट करते हैं. आप उसको देख सकते हैं, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं. और जितनी भी इनकी बड़ी खबरें होती है, स्टोरीज होती है, वो भी आपको उस चैनल पे मिलेगी. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो. तो अभी के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस.